In the second video, you will see the mutual inductance or coefficient of mutual induction. Now, in the first video, we have seen that how mutual induction works. What is the concept of the mutual induction? अभी हम इसका mutual inductance निकालेंगे. तो let phi be the magnetic flux linked with the primary secondary coil. Suppose हम consider करें phi. This is phi. Phi with the magnetic flux linked with the secondary coil. But due to the flow of current I in the primary coil, मतलब due to current flowing in the primary is I, so what it indicates, magnetic flux is direct proportional to current, phi is direct proportional to I. So to remove this proportionality sign, M is used, and this M is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. इसको दे देंगे equation 1, where M is the proportionality constant and it is called as mutual inductance between the pair of coils. Mutual inductance between the pair of coils. तो M क्या है? Mutual inductance है, and actually it is a proportionality constant. So how it works? This will be working as, now you take this equation number 1, phi is proportional to M into I. इसको ले लिया equation 1. अभी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. सो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम इज ए कांस्टेंट है तो इसलिए उसको बाहर लेंगे. द डिफरेंशिएशन ऑफ आई करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी. द डिफरेंशिएशन ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी. वी नो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. ई इज इक्वल टू वॉट? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. सो इधर ई का जगह में हम पुट क्या करेंगे? एम. सो दिस विल बिकम व्हाट? ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है? एम डी आई बाई डी टी. इधर पुट करेंगे तो क्या होगा? ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी. तो एम इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी. So mutual inductance is equal to minus of E divided by di by dt. So di by dt, if di by dt is equal to 1 ampere per second, then M is equal to E. Mutual induction is equal to EMF induced. So mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary. When unit current flows through the primary, the EMF induced in the secondary is called as the mutual inductance. So mutual inductance का definition भी लिख लिया. Mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil. जब यूनिट करंट फ्लो होता है प्राइमरी कॉइल में, देन इट इज कॉल्ड एज द, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? सेम, हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट क्या देखा था हमने? हेनरी देखा था. म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या है? हेनरी. एच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच. सो सपोज द क्वेश्चन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेनरी. सो वी नो E is equal to minus of M di by dt. So if E is equal to 1 volt, di by dt is equal to 1 ampere per second. So equation will become what? M is equal to 1 Henry. So M ka value, M is equal to 1 Henry. So how will you define this? So mutual inductance of the two coils is said to be 1 Henry if 1 volt EMF is induced in one coil, that is secondary coil, when the current in the other coil, that is primary, changes at the rate of 1 ampere per second. So 1 ampere per second रेट से जो करंट चेंज होगा प्राइमरी में, उसके बाद EMF कितना इंड्यूस होगा? 1 volt in the secondary. This is called as the mutual inductance. So mutual inductance of the two coils is said to be 1 Henry if 1 volt EMF is induced
in one coil when the current in the other coil, that is primary coil, changes at a rate of 1 ampere per second. तो ये है तुम्हारा definition of mutual inductance. तो this is also called as mutual inductance is also called as what? Coefficient of mutual induction. Mutual inductance is also called as coefficient of mutual induction. So और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Let phi be the magnetic flux linked with the secondary coil due to the flow of current I in the primary. Okay, then phi is proportional to I, which is equal to remove the proportionality sign, this phi is equal to what? Mi. We'll write phi is equal to proportionality sign निकालेंगे तो क्या होगा? Mi. So where m is what? Proportionality constant. It is called mutual inductance between the pair of coils. So now differentiating equation 1 with respect to t. So d phi by dt is equal to m di by dt. We know E is equal to minus of d phi by dt. So substituting that d phi by dt का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? m di by dt. तो इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E is equal to minus of di by dt. Okay, if I have to calculate the mutual inductance, send this di by dt to second side. So m is equal to E divided by di by dt. So if di by dt is equal to 1 ampere per second, then m is equal to E. That is called as the mutual inductance is equal to the EMF induced. So mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil. This is known as mutual inductance. SI unit of mutual inductance is Henry. How will you define the unit of mutual inductance? Henry. If I consider that E is equal to minus of m di by dt, if E is equal to 1 volt, di by dt is equal to 1 ampere per second. So m is equal to 1 Henry. So how will you define this? Define कैसे करेंगे? The mutual inductance of two coils is said to be 1 Henry if 1 volt EMF is induced in the coil. कौन सा coil है वो? Secondary coil. When the current in the other coil, that is primary coil, is changing at the rate of 1 ampere per second. So primary में अगर 1 ampere per second से current change होता है तो 1 volt EMF is induced in the secondary coil. तो ये है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन एंड हेनरी का डेफिनेशन. मीन्स डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस. हाउ विल यू डिफाइन 1 हेनरी और हाउ विल यू डिफाइन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये है डेफिनेशन. सो एक चीज़ हमें याद रखना है कि सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के केस में SI यूनिट इज सेम, दैट इज हेनरी. So at SI unit is same for both the self inductance and the mutual inductance, and on the basis of this self induction and mutual induction, now we are going to the last topic of this chapter, that is AC generator. हमको अभी कौन सा पढ़ना है? लास्ट एक टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का, that is called as what? AC generator. AC generator किसे कहते हैं? ओके, जैसे है जनरेटर क्या होगा? इट इज़ अ डिवाइस विच जनरेट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो एसी जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, मतलब जब एक कॉइल रोटेट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेकेंडरी में. तो इसी बेसिस पे अभी ये टॉपिक है, तो लास्ट चैप्टर का ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो अभी ये क्या करना है, तुम ये नोट्स इसी से बना लो. ओके, इस वीडियो से ही पूरा अच्छी तरह से देख लो. क्लोजली मैं लेके जाता हूँ.